viewers, you're watching Sansad Television and this is House Highlights with me, Rashika Gangwani. We get you all updates from both houses on the second day of the monsoon session. Before the details, a look at the headlines. Opposition disrupts proceedings in both houses of parliament. Lok Sabha Speaker expresses displeasure over protests. Weapons of mass destruction bill moved in Rajya Sabha. Bill prohibits people from financing activity related to weapons of mass destruction and delivery systems. Opposition's vice presidential candidate Margaret Alva files nomination. Election for vice president's post to take place on 6th of August. Over 3.92 lakh Indians gave up citizenship in last 3 years. Lok Sabha told that 1.7 lakh took up American citizenship. The counting of votes for presidential elections will be taken up on Thursday. It will start at 11 a.m. in Parliament House complex in the national capital. Polling to elect the new president of India was held at Parliament House in Delhi, state assemblies and other designated places across the country on Monday. The Election Commission reported over 99% turnout in an electoral college of 4,796 electors. The term of office of President Ramnath Kovind is ending on 24th of July. The joint opposition candidate for the vice presidential election, Margaret Alva, filed her nomination papers on Tuesday. Several opposition leaders, including Congress leaders Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Adhiranjan Chaudhary, NCP Sharad Pawar, Shiv Sena Sanjay Raut, DMK's Tiruchi Siva and CPIM Sitaram Yechuri were present with her. 80-year-old Alva is facing NDA candidate Jagdeep Dhankar, who filed his nomination on Monday. The vice presidential poll will be held on August 6 to elect the successor of M. Venkaiah Naidu, whose term ends on 10th of August. Rajya Sabha proceedings were adjourned for the day over the opposition disruptions on various issues from price rise to Agnipath scheme. The disruptions in the morning led to adjournment of the proceedings till 2 p.m. On price rise and other issues, and we can have discussion on that. I have no problem. Please wait, Jai. Later, when the House assembled at 2 p.m., the Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022 was moved by External Affairs Minister S. Jaishankar amid protest by opposition leaders. Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved. Deputy Chairman Harivansh adjourned the proceedings till Wednesday morning. The House had seen similar disruptions on Monday, which was the day one of the monsoon session. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 20th July 2022. Chairman M. Venkaiah Naidu apprised the members on Tuesday about the decisions taken in the Business Advisory Committee. The House will take up detailed discussion on various bills and statutory resolutions moved by the members. The Business Advisory Committee in its meeting today has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the following bills after the introduction and passing by Lok Sabha: Central Universities Amendment Bill, 2 hours. Family Courts Amendment Bill 2022, 2 hours. The National Anti-Doping Bill, 4 hours. Wildlife Protection Amendment Bill, 4 hours. The other bills which were allotted time earlier, they stand also. External Affairs Minister S. Jaishankar moved the Weapons of Mass Destruction and the Delivery Systems Amendment Bill 2022 in Rajya Sabha on Tuesday. The bill amends the Weapons of Mass Destruction and the Delivery Systems Act 2005. The bill bars persons from financing any prohibited activity related to weapons of mass destruction and the delivery systems. It empowers the centre to freeze, seize or attach funds, financial assets or economic resources for preventing such financing. Modern weapons of mass destruction are either nuclear, biological or chemical weapons, frequently referred to collectively as NBC weapons. The term weapons of mass destruction has been in currency since at least 1937,
when it was used to describe massed formations of bomber aircraft. The bill is in line with India's international obligations. This bill was passed by the Lok Sabha during the last session of the Parliament. Sir, I rise to move listed that the the bill, please. weapons of mass destruction and their delivery systems, prohibition of unlawful activities amendment bill 2022 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Rajya Sabha on Tuesday granted extension to a joint committee for submitting its report on the Biological Diversity Amendment Bill 2021. The bill seeks to reduce the pressure on wild medicinal plants by encouraging cultivation of such plants and facilitate fast-tracking of research, patent application process and transfer of research results. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 18th of July 2022 has adopted the following motion regarding further extension of time for presentation of the report of the Joint Committee of the Houses on Biological Diversity Amendment Bill 2021, that this House do extend up to the first week of Monsoon session 2022 of Parliament the time for presentation of the report of the Joint Committee on the Biological Diversity Amendment Bill 2021. Meanwhile, ministers laid papers pertaining to their ministries on the table in the upper house. सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। Dr. Bhagwat Karat. With your permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in the revised list of business for today. Thank you, sir. Dr. Bharati Praveen Pawar. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's revised list of business. Thank you. And before we head into a short break, let's take a look at some lighter moments in the upper house. Honorable Vice Chairman, sir, with your permission, I rise to present the 300 and... I'm so sorry, sir. You are the Vice Honorable Chairman, I am the sir. Chairman. These are the panel of Chairman. I apologize, sir. I withdraw it and apologize. Honorable Chairman, sir, It will go on rise record, to that's why present- otherwise... carry on. Carry on. I'm so sorry, sir. कम ही लोग जानते हैं कि स्कूटर किंग राहुल बजाज स्कूल के दिनों में बॉक्सिंग किया करते थे और व्यवसाय को लेकर उनमें जो जुनून और जुझारूपन था, उसके पीछे छात्र दिनों का बॉक्सर राहुल बजाज ही काम करता था। ये बात और है कि कॉलेज और हाई स्टडी के दौरान वो बॉक्सिंग को जारी न रख सके। हायर एजुकेशन के बाद जब राहुल बजाज के हाथों में कंपनी की कमान आ गई, तब देश में ऐसी नीतियां लागू थी जिसके अनुसार बिना सरकार की मर्जी के उद्योगपति कुछ नहीं कर सकते थे। ये व्यापारियों के लिए मुश्किल परिस्थिति थी। उत्पादन की सीमाएं तय थी। उद्योगपति चाहकर भी मांग के अनुसार पूर्ति नहीं कर सकते थे। उन्हीं परिस्थितियों में राहुल बजाज ने उत्पादन शुरू किया और खुद को देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बनाने में सफलता हासिल की। राहुल बजाज का कठिन परिश्रम ही था जिसने बजाज ग्रुप को घर घर तक पहुंचाया और उन्होंने ऐसा किया देश को 2 दोपहिया स्कूटर देकर। एक समय तो ऐसा आया जब किसी घर में बजाज चेतक स्कूटर आता था तो उसे देखने और टेस्ट ड्राइव करने वालों की भीड़ लग जाया करती थी। 70 और 80 के दशक में तय समय पर स्कूटर ना मिलने पर शादियों की तारीख आगे बढ़ा दी जाती थी। 1972 में भारत की सड़कों पर उतरने वाला चेतक उसी समय से लोगों की पहली पसंद बन गया और राहुल बजाज देश के प्रमुख उद्योगपति बन गए। राहुल बजाज को फोर्ब्स ने 2016 में दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल किया। उस वक्त उन्हें लिस्ट में 722वीं रैंक मिली थी। उनका नेट वर्थ $2.4 अरब आंका गया था। अगर फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट के हिसाब से देखें तो 12 फरवरी 2022 को राहुल बजाज की
नेटवर्थ 8.2 अरब डॉलर यानी कि करीब 62,000 करोड़ रुपए थी। समाज को दिए गए योगदान के चलते उन्हें वर्ष 2001 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। राहुल बजाज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 2 बार प्रेसिडेंट चुने गए। उद्योग चैम्बर CII के 2 बार अध्यक्ष बनने वाले वो देश के एकमात्र उद्योगपति थे। इस दौरान उन्हें 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। कई विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी उन्हें प्रदान की गई। वो इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन, IIT बॉम्बे के निदेशक मंडल के चेयरमैन समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। हमारा बजाज के देश के अपने राहुल बजाज 83 बरस की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कह गए। Welcome back to House Highlights. Now moving on to Lok Sabha. Lok Sabha proceedings were adjourned on Tuesday amid protest by opposition members over the recent surge in prices of essential commodities. As soon as the House assembled at 11 a.m., opposition members including Congress, TMC, DMK and others came to the well of the House carrying placards against the imposition of the GST on some new items. Speaker Om Birla appealed to the opposition members to go to their seats and said carrying of placards inside the House is against the parliamentary rules. He said since the House is discussing farmers' issue, the members should participate in it. Amid the din, the Speaker adjourned the House till 2 p.m. 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। As soon as the House reassumed at 2 p.m., opposition members again raised the issue of price rise. After laying off papers by members, Kirit Solanki, who was on the chair, adjourned the House for the day. सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 20 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। Several important issues were taken up during the question hour in Lok Sabha amid protest by the opposition parties over price rise. Members sought information regarding the efforts of the government to implement the Pradhanmantri Fasal Bima Yojana in the entire country. Tenant farmers are highly vulnerable to adverse climate conditions since they can be evicted due to non-payment of rent to the landowners. What measures is the government taking for encouraging more and more such agricultural tenants to enter the insurance net under the PMF Fasal Bima Yojana? ऐसे फार्मर जो टेनेंट फार्मर हैं उनके लिए सरकार की ओर से विशेष ये योजना है कि उसके अंदर भी उसको इस फसल बीमा योजना के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब से सरकार बनी है तब से ये विजन है कि हमारे किसानों को उनकी फसल का अच्छी सीड भी मिले और उन किसानों को फर्टिलाइजर भी मिले, उसके लिए उनको चाहे इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस भी मिले। बहुत सारे राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं लागू किया है और अपनी योजनाएं हैं, पर उनका जो स्टैंडर्ड है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बराबर का नहीं है।
तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सभी राज्य के कृषि मंत्रियों को बुला करके यहाँ बैठक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा हर राज्य में लागू हो, इसके बारे में क्या कोई विचार सरकार कर रही है? वैसे जो फसल बीमा योजना, जो नई फसल योजना बनी है, उसके अंदर सभी राज्यों से राय लेकर ही उसमें बनाई गई थी। और अभी भी हमारी यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी जिसमें देश भर के सभी जो कृषि मंत्री हैं उनको बेंगलोर के अंदर मीटिंग हुई और इस विषय पर भी चर्चा हुई है। और उसके अंदर ये किसानों उन मंत्रियों से आग्रह किया है कि आप जो एक फसल बीमा है उसको लागू करें। बाकी वैसे राज्य हैं वो अपनी फसल बीमा योजना के लिए स्वतंत्र है। In Lok Sabha, ministers laid papers pertaining to their ministries on the table. आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री कृष्णपाल भारी उद्योग मंत्रालय के जो कागजात हैं वो सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर श्री शोभा करांदलाजे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो दस्तावेज आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 सुश्री प्रतिमा भौमिक जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन की पटल में रखती हूँ। श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Department of Information and Broadcasting and Department of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business of law. आइटम नंबर 7 श्री निशित प्रमाणिक जी। महोदय, आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 7 पर मेरे सम्मुख रखे हुए दस्तावेज को मैं सभा की पटल पर रखता हूँ। Several ministers also presented reports of Parliamentary Standing Committee pertaining to their ministries in the Lok Sabha. Sir, I rise to present the 13th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the subject implementation of metro rail projects and appraisal Hindi and English versions listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 11 श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का निजी विश्वविद्यालयों, अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा मानकों, प्रत्यायन प्रक्रिया, अनुसंधान, परीक्षा सुधार और अकादमिक परिवेश की समीक्षा संबंधी 341वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी पाठ सभा पटल पर रखता हूं। Over 3.92 lakh Indians gave up their citizenship in the last 3 years, and 1.70 lakh of them, the highest, took up American citizenship. Lok Sabha was informed on Tuesday. Union Minister of State for Home Nityanand Rai said that according to details provided by the Ministry of External Affairs, individuals renounced Indian citizenship for reasons personal to them and took citizenship in over other 120 countries. In a written reply to a question, he said a total of 3.92 lakh Indians gave up their citizenship in 2019, 2020 and 2021. Over 6,600 electric vehicles have been recalled by 3 manufacturing units after incidents of fire involving electric vehicles were reported at some places. Minister of State for Heavy Industries Krishna Pal Gurjar informed the Lok Sabha on Tuesday. In a written reply to a question, the minister said there is no downtrend in the sale of EVs after a few fire incidents reported in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He further said the Ministry of Road and Highways has set up a committee with independent experts from the DRDO and other institutes to assert the reasons behind the fire incidents.
That's all we have in today's bulletin. For daily updates of the Parliament, keep watching Sansad Television. Good night.